टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यामाहा RX के स्पीडोमीटर वर्म के बारे में। मेरी यामाहा में 10-15 दिन में वर्म का इश्यू होता ही रहता था और जो मैं वर्म डालता था वो प्लास्टिक का यूज़ करता था। तो प्लास्टिक का वर्म जल्दी घिस जाने से मुझे बार बार प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसीलिए मैंने मार्केट से यामाहा का जो ओरिजिनल आता है मेटल का वो मैंने मंगवाया। जो मेटल का जो स्पीडोमीटर वर्म है वो जल्दी घिसता नहीं और जो 10-15 दिन में मेरा जो प्लास्टिक का वर्म घिस जाता था। तो चलिए देखते हैं मैंने मेरे यामाहा RX में वो वर्म किस तरह डाला। तो आप लोग घर पे भी ऐसे वर्म चेंज कर सकते हैं। From the dust I was born, to the dirt I shall return. When my eyes are closed, in the shadows, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome, no I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire, burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. I'm a fire, burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. Oh, I will survive. All the pain, all the hurt, all the lessons I have learned, I am stronger now. I won't let me down. Oh, my enemies will think they won, but I'm here to stay. Destiny will overcome, no I am not afraid. Like a phoenix in the night, my soul rise. From the darkness to the light, I feel alive. I'm a fire, burning bright, I'll never die. Like a phoenix in the night, I will survive. Oh, I will survive. तो कई ऐसे लोग हैं जो ये वीडियो देखकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने ये एक वीडियो नया बनाया है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड टेक केयर।